Welcome to the class. Today we will talk about plural words in English. You see, plurality is the feature of nouns. Let's look at these things one by one and we will try to understand how it works in English. We must keep in mind that when people learn language, when we learn language as a child, we learn these things automatically. We learn these things without help of any instruction. We do not go to classes to learn these things. So English speakers also learn these things effortlessly on their own. However, it becomes imperative for learning any language that we pay attention to some of these fine details, because these details help us pay attention to the underlying pattern so that learning of this language at a later stage becomes easier. So we are going to look at one such pattern underlying nouns today, which will help us learn this entire process of plural formation quickly. So let's look at this. Let's look at this thing. So let's keep in mind that plurality as a feature is the feature of nouns. So nouns are words. What are nouns? Nouns are one of the parts of a speech in human language. So the simplest possible definition of noun, and you won't need to memorize this or remember it, is nouns are naming words. They are, if we are talking about name of anything, that is a noun. This is the easiest way to identify nouns. When we use nouns in a sentence, then there are certain other tests to identify words as nouns, and we will discuss that when we go to sentences. But without forming a sentence also, if we have to identify nouns, the simplest way is to check, is it the name of anything? You know, at this point, as a footnote, I do want you to understand that we learn different definitions in different classes, different grammar books, else, and in all kinds of places. One of the definitions that we know about nouns, a very popular definition, is nouns are names of person, place and things. Person, place और things के नाम को noun कहते हैं. हम noun को कैसे पहचानते हैं? ये एक पॉपुलर डेफिनेशन है noun का. Noun एक पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन अगर आप ये छोटी सी बात याद रखें तो उससे भी सिंपल डेफिनेशन है नाउन का कि किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं. नाउन मतलब नाम. अब वो नाम किसी जगह का हो, किसी चीज का हो, किसी इंसान का हो, किसी इमोशन का हो, कुछ भी हो, और अगर वो नाम है तो उसको हम नाउन कहते हैं. अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे. जैसे चेन्नई एक जगह का नाम है तो ये भी नाउन है. मेरा नाम राजेश है, ये किसी इंसान का नाम है तो ये भी नाउन है. आदमी, लड़का, घर, ये सब कैटेगरीज के नाम हैं. जैसे घर एक कैटेगरी है, लड़का एक कैटेगरी है, आदमी एक कैटेगरी है. तो ये भी अपने आप में एक नाम है. तो ये सारे नाउन्स हैं. कुछ एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं जैसे ईमानदारी, तो ये भी किसी चीज़ का नाम है, तो ये भी नाउन है. तो
छोटी सी बात ध्यान में रखने की यह है एज ए डेफिनेशन, एज आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ नाउन्स, कि नाउन किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं, बस इतनी सी बात है। तो और ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है, ये इसके कुछ और फीचर्स होते हैं जो सेंटेंस में जब हम डिस्कस करेंगे और जब हम नाउन्स को सेंटेंसेस में देखेंगे तो वो इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पर जानने के लिए कि हम और किस चीज़ को नाउन कहते हैं। नाउन एक कैटेगरी में और तरह तरह के कुछ आ सकते हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं। तो जब हम सेंटेंस के बारे में देखेंगे, सेंटेंस के बारे में सीखेंगे, तो उस समय हम कुछ और चीज़ों की चर्चा करके देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखें, अभी सिर्फ इतना याद रखें कि नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ड को जिससे हमको ये लगता हो कि ये किसी भी चीज़ का नाम है, तो हम आसानी से उसको नाउन कह सकते हैं। अब ये नाउन का ही फीचर है कि नाउन इंग्लिश में दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। इस फीचर को, सिंगुलर एंड प्लूरल फीचर को नंबर कहते हैं। सो मतलब सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। मतलब क्या हुआ? व्हाट डज दैट मीन? ये छोटी सी बात है, हम सभी जानते हैं, लेकिन ठीक से समझने के लिए इसके बारे में सोचिए। सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं? कोई भी चीज जब एक होता है तो वो सिंगुलर होता है, कोई भी चीज जब एक से ज्यादा होता है तो वो प्लूरल हो जाता है। एक सिंगुलर, एक से ज्यादा प्लूरल। कुछ चीजें हैं, कुछ चीजों के नाम ऐसे हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हो सकते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल डिस्टिंक्शन संभव नहीं है। मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, जैसे पानी का सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है। तो ये भी एक छोटी सी चीज है ध्यान देने के लिए कि जिसको हम सिंगुलर किसको कहते हैं, एक, प्लूरल किसको कहते हैं, जो एक से ज्यादा हो। मतलब ये वहां मैटर करता है जहां पर हम चीजों को गिन सकते हैं। When we can count, only then the question of singular and plural matters. When we can't, then we can't denote something as singular or plural. It rationally follows from our understanding. So, plurality एक feature है nouns का, और how we denote plurality on nouns is something that we want to look at today. I'm going to talk to you about very basics and fundamentals of identifying it. Once we pay attention to this closely, we will understand this feature of noun inside out without making any mistakes. And probably we will not have to worry about how we identify these things. Let's see how far we move through this. So, okay. उस चीज को समझने के पहले एक चीज पर और ध्यान चाहता हूं आपका. Please pay attention to these three words that I have on the slide. पहला वर्ड है sit, दूसरा वर्ड है seats, और तीसरा वर्ड है sits. पहला वर्ड है sit, दूसरा वर्ड है seats, और तीसरा वर्ड है sits. तो ये तीन वर्ड पर ध्यान दीजिए. Please pay attention to these three words because it will help us understand the 2-3 crucial aspects. At the same time, I again remind you to pay attention to sounds. So, certain things in these words, I have colored them. For example, I have colored examples of s sounds. First one is sit.
first sound of this word is sa. Second word has two instances of sa sound, है ना? पहला साउंड सा है और दूसरा साउंड लास्ट वाला साउंड सा है. Sits. स ई ट स. लास्ट वर्ड में भी दो साउंड हैं, दो इंस्टेंसेस हैं स के. पहला है ये वर्ड क्या है? सिट्स. तो पहला वर्ड है, पहला साउंड भी इसमें, इस वर्ड में भी पहला साउंड सा है और लास्ट साउंड सा है. तो इसको हम कैसे देखते हैं? इससे क्या सीखने को मिलता है? What do we get out of this? Where I want your attention is, you see, all first instances of the sound sa do not have their meanings. They are sounds in the words. Specifically हमारे पास दो ही वर्ड हैं, sit and seat. Sit and seat. तो इस दोनों वर्ड में पहला साउंड सा है, उसका कोई मीनिंग नहीं है. लेकिन जब हम इसको, ये लास्ट वाला साउंड देखिए, इसका खासकर मीनिंग होता है. मतलब इस साउंड में, इस वर्ड में, सीट्स में लास्ट साउंड है प्लूरल मार्कर. प्लूरल मार्कर. और इस वर्ड में ये प्लूरल मार्कर नहीं है. इसलिए हम आपका ध्यान इस साउंड पर चाहते हैं. और साउंड पर ध्यान देना प्लूरैलिटी सीखने के लिए बहुत जरूरी है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पे अटेंशन टू साउंड्स एंड नॉट ऑन written symbols, not how these things are written. Okay. So, we look at this one more time. So, what is this? See, in this example, it is plurality because this is a noun. But in this one, this is not plurality, or if at all we can say this is singular. That is because this is a verb. So, अब आप देखिए कि सेम साउंड स नाउन्स में प्लुरैलिटी को डिनोट करता है और वर्ब्स पर सिंगुलैरिटी को डिनोट करता है. सिंगुलैरिटी के साथ साथ दिस डिनोट्स अदर थिंग्स आल्सो, which again we will discuss when we are talking about verbs in sentences. But just this much is what I want your attention to, that it's the same sound sa in two different words. In one word it is singular, in the other word it is plural. Not at all difficult for us to learn, not at all difficult for us to understand, because these are two different categories. One is seats is a noun, sits is a verb. I would like to mention a footnote here. These, if we pay attention to these details, not only they help us learn the language, they have at least two basic advantages. A, you get to pay attention to finest details in the language in a systematic way, which helps you, and this is the second advantage, which helps you build your accuracy pattern. And if we keep paying attention to the kinds of information that we are discussing incrementally, then we keep this incremental understanding about finest details of this language will help us understand these details, help us use them with accuracy, and eventually help us reach to the level of confidence. This is the purpose which I wanted you to know as a footnote. This is important to understand. I call it footnote because we are talking about plurality. So, I think this is making sense so far, and I'm going really slow for you to see
this thing. So, and this is what is described here. There are 5 instances of sound sa, 2 types in seats. These are of 2 types in seats. The first sound doesn't mean anything, that is, first sound doesn't mean anything, whereas the second sound is a plural marker. In sits, the first sa doesn't have any meaning, but the second sa is a singular marker. Okay, this is important for us to see here. So, it's nice to look at sounds. It's helpful to learn plurality by paying attention to sounds. Technically, this plural marker or this singular markers are called morphemes, not the first instances of these sounds sa. Because they are part of the word, they are individual sounds. But these plural markers, because morphemes are smallest unit which have their own meaning, and here the meaning is plurality. It has grammatical meaning, but it denotes some meaning, plurality, and therefore it's called morpheme. Not important to remember, but what is important to remember is again the distinction between these 2 sounds, how the same sound in one word, that is noun, denotes plurality, and how the same marker, same sound sa in another word which is a verb, denotes singularity. Now, let's pay attention to nouns. So, let's pay attention to only nouns now. And I have purposely picked few words here. You will see why I have picked these words. And when I talk about what you need to do to learn these things, I'll suggest you to pick any kind of nouns. So let's look at these nouns. So what are the very simple common words that we all know, like dog, friend, judge, bench, baby, book, cap. I am sure, मैं समझता हूँ कि आपने ये सारे वर्ड्स जरूर सुने होंगे. ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं. डॉग, फ्रेंड, जज, बेंच, बेबी, बुक, कैप. तो मैं आपको इसका मीनिंग नहीं बता रहा हूँ हिंदी में, आप क्योंकि आप समझ सकते हैं. और ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं. मीनिंग के अलावे हम आपका अटेंशन दूसरी चीज़ पर चाहते हैं, तो आप वहाँ ध्यान दीजिए. जब हम ये सिंगुलर काउंटर पार्ट हैं, ये सारे हम ऐसे देखें कि सिंगुलर हैं और ये वाले प्लूरल हैं. नेचुरली हम आपको यही चीज़ दूसरी जगह दिखाते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये सिंगुलर नाउन्स हैं और ये प्लूरल नाउन्स हैं. नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के पहले मैं चाहता हूं कि आप इसमें प्लूरल मार्कर्स को अंडरलाइन कर लीजिए अपनी सुविधा के लिए. तो प्लूरल मार्कर्स क्या दिखेंगे आपको? ये दिखते हैं, ये दिखते हैं, ये दिखते हैं, ये दिखते हैं, ये हैं, ये हैं और ये हैं. तो प्लूरल सिखाने के लिए भी बहुत तरह की चीज़ें सिखाई जाती है क्लासेस में, किताबों में. one of the common things that we learn is plural markers are S, like in dog and friend, ES as in benches, IES as in babies. तो ये तरह तरह की चीज़ें हम सीखते हैं प्लूरल मार्कर के तौर पर. प्लूरल ये हमको बताया जाता है कि हम किसी वर्ड्स के अंत में ये वाला एस लगाते हैं, किसी वर्ड के अंत में ईएस लगाते हैं और किसी वर्ड के अंत में आईईएस लगाते हैं, और कुछ जनरल रूल्स भी बताए जाते हैं. और जहां ऐसा नहीं होता है वो एक्सेप्शंस है. तो हम आज आपके साथ वो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें बहुत कम एक्सेप्शंस बचते हैं, और वो हैं जैसे एक वर्ड होता है
इंग्लिश में वो है चाइल्ड। तो आप जानते हैं, यू नो दैट एज ए प्लूरल इट बिकम्स चिल्ड्रन and not childs, not like this. So this is a different development. This is a different kind of historical development in English. So we are leaving this aside. We are looking at the bulk of nouns, where if you look at this pattern, you will get to learn how to make plurals. So, acha, at the same time, I also want to tell you that the purpose of this discussion is not to prove what is available in books or anywhere else wrong. That's not my purpose. My purpose is to help you understand plural marking in simpler way. So when people say add s, add es, add ies, they are talking about how things are written. However, when we are talking here, we are going to talk about how these words sound in plural. एक बार फिर से मुझे ध्यान से सुनिए. When people talk about s, es, ies, ves and all kinds of plural markers, they talk about how these plural nouns are written. That is, they are talking about the spelling of these words. I want your attention to how these words sound when we read them, because the key of plurality is hidden in sounds of these plural markers. So let me move to the next part. How do plural markers sound? So ये देखिए, अब आप ये डिक्शनरी में भी देख सकते हैं, लेकिन इसको ठीक से देखिए. जब हम प्लूरल मार्कर्स बोलते हैं तो ये होते हैं जब इस पहले वर्ड में डॉग में प्लूरल मार्कर बोल रहे हैं, तो प्लूरल वर्ड क्या है? डॉग्स, फ्रेंड्स, जजेस, बेंचेस, बेबीज, बुक्स एंड कैप्स. तो आप जब ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला प्लूरल मार्कर का एक्चुअल साउंड ज है. फ्रेंड्स में भी जो प्लूरल मार्कर है वो ज साउंड करता है, वो ज साउंड करता है. जजेस में, सो प्लूरल मार्कर इन डॉग्स इज ज, प्लूरल मार्कर्स इन फ्रेंड्स sounds as z, plural markers in judges sounds is, judges, judges, judge, judges. ये भी z है, लेकिन इसमें एक वॉवेल साउंड आता है, is, judge, is. उसका रीजन ये है, आप ध्यान दीजिए, हम अभी जब वर्ड्स के बारे में सीख रहे थे तो हमने सीखा था कि पैटर्न होता है CV, CV, CV. हर कॉन्सोनेंट के बाद यूजुअली जब वॉवेल आता है, इसका पर्पस ये होता है कि ये इससे बोलने में आसानी होती है, हम आसानी से बोल सकते हैं. 2 कॉन्सोनेंट वाले क्लस्टर तो बोल सकते हैं, 3 कॉन्सोनेंट वाले क्लस्टर भी बोल सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा साउंड का जब क्लस्टर बनेगा तो बोलना मुश्किल होगा. A cluster of more than 4 consonant sounds will make it very difficult to pronounce a word. This is the simplest reason why we don't have clusters of too many consonant sounds, words with clusters of too many consonant sounds. In fact, in some languages, it is quite a normal pattern to simplify clusters by inserting vowels. आप अगर ध्यान दें तो आपने सुना होगा, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जैसे स्कूटर, स्कूल. स्कूटर में स और क का क्लस्टर है. कुछ हिंदी स्पीकर्स, कुछ स्पीकर्स ऑफ दूसरे लैंग्वेजेस के स्पीकर्स जब स्कूल और स्कूटर बोलते हैं
तो वो दोनों स और क के बीच में एक वॉवल साउंड इंसर्ट करके उस क्लस्टर को खत्म कर देते हैं, मतलब वो बोलते हैं स्कूटर, स्कूल. अब right now we don't want to discuss whether that is right or not right. I can only point it out to you. They are doing it because the language that they have learnt effortlessly as their first language does not give them space for clusters. So it's a very natural process for them to do it. But when we want to learn a new language, we can learn clusters. We can learn, because it's okay, it's still okay to speak a cluster of two sounds, two consonant sounds. But more than two consonant sounds becomes very difficult. I discussed this part when I was talking to you about clusters. So I want to use that for you to understand why in this case it becomes, we need a vowel sound here, is. So आप ये वर्ड देखिए जज, इस वर्ड का लास्ट साउंड है ज, जज, ज. अब इसमें जब प्लूरल मार्किंग ज जोड़ेंगे तो उसका बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा बिना इस वॉवेल साउंड के. तो इसलिए एक वॉवेल साउंड इंसर्ट करके ये बन जाता है जजिज, जजिज, और ये आसान हो जाता है बोलना. अदरवाइज ये भी अपने आप में एक ज साउंड ही है. बेंचेस, इसमें भी वही हो रहा है. लास्ट साउंड बेंच का च है, बेंच, च एक पैलेटल साउंड है. अब दूसरा पैलेटल साउंड, पैलेटल फ्रिकेटिव ज, हम उसमें जोड़ना चाहते हैं एज ए प्लूरल मार्कर. तो बिना वॉवेल साउंड के वो मुश्किल होगा जोड़ना, इसलिए इसमें भी एक छोटा सा वॉवेल साउंड इंसर्ट करके इसको बोलना आसान हो जाता है. इट बिकम्स मच इजियर टू स्पीक दैट. अदरवाइज द वॉवेल प्लूरल मार्कर, प्लूरल मार्किंग साउंड इज ज. बेबीज, अब आप देखिए यहां पर इस वॉवेल की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस वर्ड बेबी ends with a vowel sound. What's the last sound in the word baby? Baby, baby, baby. ये लॉन्ग ई है. जैसे ही हम कोई दूसरा साउंड इसमें जोड़ेंगे, लॉन्ग ई शॉर्ट बन जाता है. और आप बोल करके देखिए, इट बिकम्स बेबीज, बेबीज. लॉन्ग ई शॉर्ट बन जाता है, और फिर because it already has a vowel sound in it, we only need to add z. Okay? Now, so for all these dogs, friends, judges, benches, babies, plural marking is z. ये लास्ट वाले दो वर्ड्स को देखिए, बुक्स एंड कैप्स. इसमें प्लूरल मार्कर स है, ज नहीं है. तो अभी जो आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एग्जाम्पल्स में देखा, इसमें दो प्लूरल मार्किंग पैटर्न है. एक है साउंड ज और दूसरा है साउंड स. तो इस तरह से जब आप किसी भी वर्ड के प्लूरल मार्किंग पैटर्न को देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि सिर्फ दो पैटर्न है प्लूरल मार्किंग के इंग्लिश में. सिर्फ दो चीजें याद रखनी है हमको. एनी वर्ड, एनी सिंगुलर वर्ड इन इंग्लिश, इफ दैट वर्ड एंड्स विथ 3 साउंड्स, प, त एंड क. ये यहां देखिए, प, त और क. इसके बाद जो प्लूरल मार्कर आएगा वो उस स में साउंड करेगा, उसका साउंड होगा स. ठीक है? और कहीं भी हमको एंड वर्ड, एंड साउंड देखने की भी जरूरत नहीं है. ये ज होगा या इज होगा. एवरीवेयर एल्स द प्लूरल मार्कर इन इंग्लिश इज ज. और जहां पर वो जजेज और बेंचेज वाली और बेबीज वाली बात आते हैं, वहां पर ये ज इज साउंड होगा, इज. तो आप ये जानते हैं कि ये दोनों ऑलमोस्ट एक तरह की चीज है. किसी खास सिचुएशन में, स्पेशल सिचुएशंस में, जहां पर लास्ट वाला साउंड भी पैलेटल सीरीज का साउंड होता है, तो हम वहां पर वॉवेल इंसर्ट करना पड़ता है. बट दो चीज याद रखने की जरूरत है, स एंड ज.
as plural markers. When nouns end with pa, ta, ka sounds, plural marker sounds as sa. When nouns end with anything else, that could be a consonant, that could be a vowel, any kind of vowel, the plural marking sound is z. अब आप इसको आप बहुत अच्छी तरह से देखिए, जैसे आप इस वर्ड को देखिए, बहुत सिंपल वर्ड है, बॉय. जब ये इसका हम प्लूरल बनाते हैं, ये तो सही बात है कि we add s at the end of it. But how does this word sound? This is boys. Boys. The last sound is again z. और जब हम, let's take another simple word, cat. What is the plural of this? Again we add s at the end of it. But how does it sound? Cats. 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 अब आप ध्यान दीजिए कि यहां पर क्या होता है कि ये t, because of t, this sound is sa. तो ये देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, बुक में का है, बुक का लास्ट साउंड का है, कैप का लास्ट साउंड पा है और कैट का लास्ट साउंड टा है. इसलिए इसके बाद जो प्लूरल मार्कर आते हैं वो सा में साउंड होते हैं. सा. बुक्स, कैप्स, कैट्स. बॉयज, गर्ल्स, फ्रेंड्स, डॉग्स, बेंचेस, टेबल्स, ये सारे के सारे ज साउंड होते हैं. ये कितना सिंपल है इंग्लिश का प्लूरल मार्किंग समझना. अब कहां पर वो स और ज एस की तरह लिखा जाएगा, कहां पर IAES की तरह लिखा जाएगा, कहां पर ES की तरह लिखा जाएगा, ये स्पेलिंग का मैटर है, ये साउंड का मैटर नहीं है. अब let me underline this part again. If you pay attention to sounds and look at the plurality in nouns, your pronunciation improves dramatically. It becomes very close to the pronunciations of the speakers who have learnt English intuitively, natively. And it also helps you maintain your accuracy. And then when your accuracy is maintained, your confidence develops. I am underlying this part almost every time as a mantra that fluency comes only through accuracy. Fluency comes only through accuracy. Fluency without accuracy is not important, is not useful. So fluency through accuracy is the goal for us, and eventually when together they build our confidence, then we become confident as a communicator, then we sound confidence in our communication. So please remember this trajectory, and all these finer details are to help you reach that trajectory, that goal, and you will get to see that. There are couple of other issues about sounds which I will discuss with you in a different class. But before I end today, I want you to look at the exercises that you need to do. I have done this exercise with you to identify what the sounds are, how they sound, and how that is what they sound as plural, and what is the underlying rule in these plural markers. What I want you to do now is to pay attention to take any 20 words, take their plural counterparts, underline the plural markers, and see how they sound to you. Apply this rule and derive the plural marker. Start using them in your conversation, in your speech, and see the fruit of the confidence that it gives you.
if you ever get confused with how they sound, you can always go to dictionary. You can always check this sound in the dictionary and find it out. And this applies to most of the words in English except a few, like where remember we talked about child and children. We are not talking about teeth. This is the plural of tooth. So there are few words which are pluralized because of some infixation. This is some historical development from Old English to New English. These are different things. So we don't want to pay attention to a small number of nouns which have different kind of pluralization, but we want to, what I discussed with you today is the underlying pattern which solves the mystery of plural sounds in large number of English words when we speak. This is one part. One more part where I want your attention is this rule. I'll come back to this rule one more time. But what is common between pa, ta and ka? Why is it that only with these three sounds the plural marker sounds sa? What is common? There is something specifically common in these three sounds. I'll give you a hint before I discuss this in detail. The hint is when you check their places of articulations, that is where they are articulated in our oral cavity, and when you pay attention to their manners of articulations, you will find the answer. There is something common between these three sounds. Why a plural marker sounds sa when these sounds are at the end of the word, and everywhere else it's za. Everywhere else का मतलब होता है in large number of words it is za. So we can confidently say that the default plural marker in English is za. In some cases it becomes sa. So there is a similarity between sa. There are something common between these two sounds as well, sa and za. Again, if you pay attention to the places of articulations of these plural markers, you will find it out, and you will see that in these cases, like in the cases of pa, ta and ka, za becomes sa. I'll discuss this part, but should not be very difficult for you to figure it out on your own. Please pay attention to this thing. Please pay attention to this thing. These details, and they will help you build this thing, and they will help you understand plurality of nouns in English with greater confidence to a greater extent. Thank you so much.